राज्य स्तरीय कार्यालय में वर्तमान में कार्यरत हूँ और वर्तमान में मैं ईसीसी जिसका नाम है प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख शिक्षा को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ। आज का जो कार्यशाला है इसके बारे में जैसा कि विदित है कि कई संस्थाएं जैसे पिरामल, यूनिसेफ, आईपीएल और सेव द चिल्ड्रन, इन सारे लोगों के साथ मिलकर के एक विचार विमर्श करने की बात बनी कि हम लोग राज्य में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख शिक्षा को कैसे बेहतर कर सके, बेहतर ढंग से संचालित कर सकें। जैसा कि हम जान रहे हैं कि आरटी एक्ट 2009 के अनुसार इसको आवश्यक किया गया है कि 3 से 6 वर्ष के सारे बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना है। इसके बाद समग्र शिक्षा के अंतर्गत ये बात ध्यान में लाया गया कि 3 वर्ष से 12 वर्ष तक के बच्चों को हॉलिस्टिक रूप से एजुकेशन प्रोवाइड करना है। और इसके बाद एनईपी की जब बात आती है तो ये हुआ कि हम लोगों को एक लक्ष्य दिया गया कि ये 3 से 6 साल के सारे बच्चों को किस प्रकार से 2030 तक हम लोग अचीव कर पाएंगे, स्कूल उपलब्ध करा पाएंगे, क्योंकि यह आवश्यक है आरटी, एनईपी और समग्र के आधार कि कोई भी बच्चा जो है पूर्व प्राथमिक कक्षा की शिक्षा से वंचित ना रहे 2030 तक। और इसी को ध्यान में रखकर 2030 तक कैसे सारे लोगों को हम लोग कवर करेंगे, हम लोगों ने पर्सपेक्टिव प्लान बनाने की योजना बनाई है। और इस पर्सपेक्टिव प्लान के अंतर्गत उसको जो गतिविधियां करनी है, सारे बच्चों को आंगनवाड़ी से जोड़ करके कैसे सारे बच्चे आएंगे, यही 5 साल का प्लान बनाने के लिए ये कार्यशाला महत्वपूर्ण रूप से हम लोगों के लिए लाभदायक है। और इसमें बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से जो भी गतिविधि निर्धारित की जा रही है, उन सारी गतिविधियों में बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से सहयोग इस रूप में किया जा रहा है कि कोई भी आंगनवाड़ी यदि स्कूल के प्रेमिसेस में आ जाता है या स्कूल से बाहर भी है तो उसको एकेडमिक सपोर्ट कैसे दिया जाए। शैक्षणिक सहयोग देने के लिए जो योजनाएं बनती हैं, उन योजनाओं को हम लोग क्रियान्वित करने के लिए एक फाइनल प्रस्ताव भारत सरकार के पास ले जाते हैं। भारत सरकार से राशि उपलब्ध होती है और उस राशि से हम लोग ज़मीनी लेवल पर कार्य करने का प्रयास करते हैं। इस ज़मीनी लेवल पर कार्य करने के लिए और उसको प्रभावी बनाने के लिए इस तरह की कार्यशाला की महत्वपूर्ण भूमिका है। और इस कार्यशाला की मदद से ही हम लोग ये सोच सकते हैं कि जो भी गुणवत्ता हो, ईसीसी की जो क्वालिटी की बात होती है वो यूँ तो हम देख रहे हैं कि कई तरह से आंगनवाड़ी हमारे यहाँ चल रहे हैं। आईसीडीएस की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो कि आंगनवाड़ी केंद्रों में 1,14,000 लगभग आंगनवाड़ी हैं, जिसको कि सशक्त करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन उनके शैक्षणिक स्तर को, उन बच्चों के शैक्षणिक स्तर को बेहतर करने के लिए ये आवश्यक था कि इस तरह की गतिविधियों में हम लोग देखें कि लर्निंग रिसोर्स मटेरियल क्या हो सकता है, प्लेइंग मटेरियल क्या हो सकता है, और बच्चों का जो असेसमेंट होता है, असेसमेंट कार्ड कैसे बनेगा, इन सारी बातों को भी हम लोगों ने ध्यान में रख करके इस कार्यशाला का आयोजन किया है। और इस कार्यशाला में हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के एससीईआरटी जो एकेडमिक अथॉरिटी है, वो आईसीडीएस जो कि समेकित बाल विकास परियोजना बच्चों के होलिस्टिक प्रोग्रेस के लिए जो कार्यक्रम चला रहे हैं, उसका पीएम पोषण, सारे कार्यक्रमों का इसमें समावेश किया गया है। इसलिए ये कहना उचित होगा कि इस कार्यशाला की बदौलत हम लोग एक ऐसे स्तर पर पहुंचेंगे जहां से कि हम लोग गुणवत्तापूर्ण पूर्व प्राथमिक शिक्षा हम लोग उपलब्ध करा सकेंगे उन बच्चों को जो कि एनईपी के तहत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो 4 प्रकार के डोमेन हम देख रहे थे कि आंगनबाड़ी केंद्रों को एकेडमिक सपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए 3-4 तरह की बातें हैं। पहले तो है कि जो कोलोकेटेड स्टेप 1 में हम लोगों ने लिया था कि जो विद्यालय परिसर में हमारा आंगनवाड़ी संचालित है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर मिले, उसको जो एकेडमिक सपोर्ट देना है, शिक्षकों का सपोर्ट मिले, और आंगनवाड़ी सेविकाओं को शिक्षकों को आंगनवाड़ी सेविकाओं का सहयोग मिले। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि जो भी आंगनवाड़ी नियर बाय है, माने किसी स्कूल के नज़दीक में है, तो उसको स्कूल से हम लोग जोड़ दें। और इसी को ध्यान में रख करके हमारे यहाँ एजुकेशन डिपार्टमेंट से भी ये एक निर्देश दिया गया है कि जो भी हमारा आंगनवाड़ी जो है यदि भवनहीन है, भूमिहीन है, तो उसको नज़दीक के उन विद्यालयों में शिफ्ट कर दिया जाए जहां पर कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर हो। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर का मतलब कि बच्चों के लिए ऐसा प्रेमिसेस जो जहाँ बच्चे खेल कूद सकें, कमरे के हो, ठीक है, वो भी मिल जाए। इसके बाद हम लोगों ने उस शिफ्टिंग के बाद एक ऐसा देखा कि 1,14,000 आंगनवाड़ी को
यदि हम लोग इसके साथ मर्ज करते हैं तो बहुत सारे ऐसे जगह मिल जाते हैं जहाँ पर कि उस कैचमेंट, उस हैबिटेशंस में कोई भी आंगनवाड़ी अभी नहीं है। और 1 किलोमीटर के दायरे में यदि कोई आंगनवाड़ी केंद्र नहीं है तो वहाँ पूर्व प्राथमिक कक्षा स्थापित करने के लिए भी एक प्रयास करने की बात है। ये अगले 5 सालों में हम लोगों की ये भी योजना है। और इसके बाद तो हम लोग धीरे धीरे इस ओर आगे बढ़ रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इस तरह के कार्यशाला से जो रिजल्ट मिलेगा उस रिजल्ट को लेकर के हम लोग कुछ इससे जो फीडबैक मिलेगा और बेहतर करने का प्रयास करेंगे सर। धन्यवाद। The road was not easy, but at least there was a way. What was needed was knowledge, as then confidence follows. Needed someone to just show our strength. Someone to have your back in difficult times. And all this support leads to positive change. And with the vision of our founder, Shri P.P. Singhal at PI Industries, our utmost value is to bring change to the farmers, communities, and the nation we all serve. Armed with these thoughts, PI Foundation took up the challenge to stand with those aspirations and bring that change. CSR initiative under PI Foundation banner, typically focusing on 5 the areas. One is the health focus, other one is the education, third area is on the skill development and the livelihood, fourth area is towards the women empowerment, and fifth area is towards the biodiversity, on which we have been working. This is complemented by farm-level interventions, providing path-breaking ways to produce more paddy with less water consumption, while being environmentally conscious. PI Foundation has been driving various programs for making education, entrepreneurial and employability skills, and healthcare accessible for all. From the time it started operations, a visible change is seen across the villages in Bharuch, Nasik, Hanumangarh, Ludhiana, and many other districts of Punjab, where initiatives have not just improved the quality of life, but also increased family incomes across society. With these interventions, we at PI Foundation have learned that women's empowerment can transform a society. 20 લીટર જેવો શરૂઆત કર્યા હતા અમે. અત્યારે તો 220 લીટર જેવું થાય. અત્યારે સારું છે, 220 લીટર જેવું થઈ જાય એટલે સારું લાગે છે. અને અમારું શાંતિ મળી કિંમત બહાર રાત્રે 8 વાગે જવાનું હતું. એ અમારું પ્રોબ્લેમ સારું થઈ જાય અત્યારે. अंडर 100 से जूट PI फाउंडेशन में हम जोड़ाए, फिर हमने वहाँ से स्टार्ट किया, मंडल में जुड़ा के फिर मैंने क्रेडिट लोन 30,000 की ली बाहर से. सीसी लोन કરીને મેં 50,000 રૂપિયા લોન લીધી, એમાંથી મેં સાડીનો બિઝનેસ ચાલુ કર્યો. That the youth just want to be given that little ballast for them to take off. So there are 4 or 5 different courses for which PI has designed the syllabus for these courses in consultation with the expert to make sure that people get necessary the knowledge and the training. यहाँ से प्लेसमेंट मिला, वहाँ मैंने जॉब की. मेरी फर्स्ट प्लेसमेंट पे मेरे को सुपरवाइज़र की पोस्ट मिली.
पीआई फाउंडेशन की तरफ से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, मेरा हौसला बढ़ा है, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा है। तो यहाँ से मुकेश सर ने मेरा दूसरी जगह प्लेसमेंट करवा दिया, जो कि अक्सर चौक में है। Seeing confidence amongst these budding entrepreneurs in contemporary rural society is our return for which we strive. We are covering 80 villages, which has got more than 500 self-help groups. And to these 500 self-help groups, 7,000 women are associated as a self-help group members. And they are basically now generating the income for their families. આજુબાજુ ગામમાં જે મારા જેવી બહેનો હોય જેને જરૂરિયાત હોય તેને હું ટ્રેનિંગ આપું છું અને મારી જેવી રીતના એ આત્મનિર્ભર બની શકે એની માટે હું એમને આગળ લાવવાની કોશિશ કરું છું. તે પૂછે છે એટલે નામ આગળ આવી ગયું છે, બહેનો ડેરી ચલાવે છે, બધા પૂછે છે કે સરસ ગામમાં આવી ગયું ડેરી ને બધા બહેનો કામગીરી કરે છે. અમારે 11 બહેનો નામ છે પણ મારું નામ થોડું મોટું છે એટલે સારું લાગે છે. પપ્પા પણ તમે કરજો, ઘેરના કામ છોડી રાખવાનું પણ તમારા કામ કરજો એવું પણ મારા સસરાજી શીખવાડે છે. फिर हमने 50-50 रुपये बचत की, फिर एक महीना 50 रुपये बचत की, दूसरे बार हमने 100 रुपये बचत की, फिर हमने 150 की। मंडल में से मैंने 5,000 लोन ली, फिर थोड़ी बहुत सामान ला के मैंने ये नाश्ते की दुकान खोली। सब मेरे घर के भी सब खुशी है, मैं भी खुशी हूँ, बहुत अच्छी से हमारा गुजारा चलता है। We have curated many broad work streams impacting the lives of youths by making them industry ready at our skilling centers. मेरे फ्रेंड के थ्रू मेरे को मालूम हुआ कि पीआई फाउंडेशन में फ्री ऑफ कॉस्ट में बहुत सारे कोर्सेज चलाए जाते हैं। मैंने 3 महीने का कोर्स पूरा किया, बाद में प्लेसमेंट मेरे को मिला। मैं पीआई फाउंडेशन के लिए बहुत थैंकफुल हूँ, उनका शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने बहुत कुछ मुझे सिखाया और मैं बाहर भी मेरे फ्रेंड सर्कल में और बहुत लोगों को बताऊंगी कि तुम भी यहाँ पर जा सकते हो और बहुत कुछ सीख सकते हो और प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी भी यहाँ से दी जाती है। जी मैंने यहाँ से बीपीओ का कोर्स किया जो 90 दिन का था, और उसमें साथ साथ इंग्लिश का भी और कंप्यूटर भी सिखाया। ये 90 दिन के कोर्स के बाद मेरी एग्ज़ाम हुई और फिर मुझे तुरंत यहाँ से मेरा प्लेसमेंट करवाया गया। But our efforts are not limited to the mainstream. It also took care of those who were off the grid. પીઆઈ ફાઉન્ડેશન અને બાળકોને જે મેઇન સ્ટ્રીમમાં ભેળવવા માટે ખૂબ સરસ પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો છે અને એના ખૂબ સારા પરિણામ અમારી શાળા કક્ષાએ પણ જોવા મળે છે. Initiatives like mobile medical units, providing preventive and curative healthcare with specialized medical camps around gynecology, pediatrics, dermatology, have reduced financial burden on health expenditure for the poor families and impacted many lives across villages. Aimed at fostering social infrastructure and creating an ecosystem for sustainable economic development, many village-level interventions like Project Bandhan and tech-driven testing such as soil health and quality analysis have brought smiles to many farmers and their families across 14 states of India. At PI Foundation, the answer is not difficult at all as long as we keep our people at core of our purpose. India and UNICEF both turned 75 this year. We have a dream for every child. A dream of health, safety, and well-being. Looking back at these past 75 years, UNICEF celebrates its partnership with India. Strong foundations that have nurtured children and their health. From the first ever penicillin plant in India to providing crucial technical support to Amul, we have travelled together, hand in hand. And today,
India is the world's largest milk producer. We partnered with the government to install the Mark series of hand pumps and ushered in the water revolution in the country. Together with government and partners, UNICEF helped implement the Integrated Child Development Services and rolled out the National Mission on Immunization. When the tsunami struck, UNICEF stood in support to rebuild livelihoods. Working as one with the government, partners, and frontline health workers, we helped eradicate smallpox and polio from India, from 200,000 polio cases in the 1980s to 0 cases in 2012. We supported the Swachh Bharat mission and India's vision of becoming open defecation free. And during this pandemic, we remain committed to the fight against COVID-19. Children have been the silent victims of the COVID-19 pandemic, which has undone decades of hard work and progress. More than ever before, we must work harder to fulfill the dream we collectively saw 75 years ago for all children in India. Our history says, together we can do anything that we set our minds to. Join us in making this dream come true, where every child has a healthy, safe, and bright future. A future free of disease, malnutrition, and exploitation. We will not rest. Our journey has just begun. Together, let us reimagine a fair world for every child.